Hello everyone, welcome to PracticeMock. Today we are going to have a look at some error detection questions which are important for banking exams. So the first question, okay, so in this type of questions, uh, instead of giving a single sentence, a set of 3 sentences is given, and out of these 3 we have to identify which sentences are grammatically correct. So in the following questions, 3 sentences are given revolving around the same idea. We have to decide which of the sentences are grammatically and meaningfully correct. So we have to find out which sentences are correct. Okay. So the first sentence in this set of questions says, contrary to popular belief, chocolate was not first enjoyed by the Europeans nor by the ancient Mayans. So contrary means opposite or against. तो opposite to popular belief, जो popularly लोग मानते हैं उसके opposite, chocolate was not first enjoyed by the Europeans. So people believe that chocolate was first enjoyed by Europeans, but the sentence is saying that opposite to this belief, chocolate was not first enjoyed by the Europeans nor by the ancient Mayans. So यहाँ this sentence is grammatically correct. Contrary to popular belief, chocolate was not first enjoyed by the Europeans nor by the ancient Mayans. The second sentence says, a team of scientists discovered cacao remains in the Ecuadorian Amazon dating back to 5500 years ago, belonging to the Mayo Chinchipe people. So a team of scientists discovered cacao remains. What does remains mean? Remains means something which is left after. कोई चीज़ जब खत्म हो जाती है उसके बाद कुछ बचता है. तो साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट ने they have discovered some cacao remains. cacao चॉकलेट के beans, cacao beans होते हैं. So उसके remains मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को कहाँ? In the Ecuadorian Amazon, dating back to 5500 years ago, belonging to the Mayo Chinchipe people. So this sentence is also correct. Okay. The third sentence, the domestication of cacao plants as well as pottery and architectural remains reveals a lost civilization that lived in the Amazon rainforest. So the domestication of, is this sentence also correct? The domestication of cacao plants, जो cacao plants को domesticate यानी उनको cultivate करना शुरू किया गया, as well as pottery and architectural remains. So the sentence is talking about a number of things. First is domestication of cacao plants. Second, it is talking as well as also it is talking about pottery and architectural remains. So it is talking about these 3 things, and these 3 things. For this, which verb will we use with this? It is talking about the domestication of cacao plants as well as pottery and architectural remains. ये क्या reveal करते हैं? So reveals is reveals will be used with a singular verb, whereas यहाँ पर क्या है? यहाँ singular noun. यहाँ पर subject क्या है? यहाँ पर more than one subject. There are more than one subjects. Cacao plants, okay, as well as pottery and architectural remains. So there are 3 subjects. So यहाँ पे क्या होगा? Reveals नहीं होगा, it should be reveal. Why reveal? Why reveal? Because plural subject के साथ we will have to use a plural verb. So that means 3 is incorrect, 1 and 2 are correct. So our answer should be B, 1 and 2. In the next set of sentences, the first sentence says, found in 1354 CE by the Sultan of Delhi, Firoz Shah Tughlaq, Firozabad was built as a palace city that was twice the size of the walled city of Shahjahanabad. So this sentence is talking about a city named Firozabad, which was established in 1354. And it was built as a palace city, a city which containing many palaces, that was twice, it was double the size of the walled city of Shahjahanabad. So is this sentence correct? The first, see, look at this word, found.
Found in 1354. Found. See, found. We know find. Find is the base form verb. Find means what? To search for something, किसी चीज को ढूंढना. Find की second form क्या होती है? Found. Okay, we are familiar with this. Find and found. But found is also a base form verb. Okay, and and this found means what? Found means to establish. And इसके second form क्या होगी? Founded. So what does founded mean? Founded mean established. Whereas find and found, they mean search. Okay, or looked for something. So यहाँ पे found का मतलब क्या? Found incorrect क्यों है? क्योंकि यहाँ पे establishment की बात हो रही है एक city की, and the city was established by the Sultan of Delhi, Firuz Shah Tughlaq. So it should not be found, it should be founded. Okay, so it should be. The second sentence says, as ban on foreign imports were implemented after World War I, the glass industry of Firozabad experienced a drastic growth. So in this sentence, as ban on foreign imports were implemented, foreign imports ban किए गए, ठीक है, they were implement. What does implement mean? To implement means to execute something, किसी काम को execute करना. So bans जो है वो implement किए गए after World War I. उससे क्या इफेक्ट हुआ? द ग्लास इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद एक्सपीरियंस ड्रास्टिक ग्रोथ. तो उन इम्पोर्ट्स पे बैन की वजह से जो ग्लास इंडस्ट्री थी उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई. ड्रास्टिक मीन्स एक्सट्रीम ग्रोथ. सो उसके बिकॉज ऑफ दोज बैन्स फिरोजाबाद में की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने लगी. अब यहाँ पे डज दिस सेंटेंस इज दिस सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट? सी, the as ban on foreign imports were implemented. Were is used with a plural verb, a plural subject. Okay, so were is a plural verb and we use it with a plural subject. But यहाँ पर subject क्या है? Ban, and ban is a singular noun. So the subject is singular. So यहाँ क्या होना चाहिए? Either it should be as bans on foreign imports were implemented, या तो bans होना चाहिए, या फिर it can be was, as ban on foreign imports was implemented. So ये sentence incorrect है. ठीक है, so either ban की जगह bans होना चाहिए या फिर were की जगह was होना चाहिए. Subject to verb agree नहीं कर रहे हैं. The third sentence says, after India's independence in 1947, it soon became India's leading glass supplier. So India के independence के बाद it is referring to Firozabad. Firozabad became India's leading glass supplier, and today accounts for means it provides approximately 70% of the country's glass production. तो ये sentence grammatically correct है. That means our answer should be 3. So it is D. Correct answer will be D. In the next set of sentences, the first sentence says, poetry's ability to provide comfort and boost mood during periods of stress, trauma and grief may have a lot to do with framing and perspective. So poetry's ability to provide comfort. Poetry क्या करती है? It provides comfort and देखो अब and boost mood during periods of stress. अब यहाँ is boost correct here? क्या boost correct है? Ability to provide comfort and boost mood during periods of stress. A boost can also it can be used as a noun. Okay, the economic package provided a boost to the package provided a boost to the economy. तो यहाँ noun की तरह भी use हो सकता है, and it can also be used as a verb. Boost can also be used as a verb. यहाँ पर कैसे use हो रहा है? It is being used as a verb. So poetry's ability to provide infinitive construction, to plus verb. So to के बाद base form verb होनी चाहिए. To provide comfort and dash mood during. So to ये दोनों verbs जो है they should be parallel in form.
क्यों? क्योंकि बीच में क्या आ रहा है? एंड, ठीक है। सो पोएट्रीज एबिलिटी टू प्रोवाइड कंफर्ट एंड बूस्ट मूड ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ स्ट्रेस। तो यहाँ पर बूस्ट करेक्ट है। पीरियड्स ऑफ स्ट्रेस, ट्रॉमा एंड ग्रीफ मे हैव अ लॉट टू डू विद फ्रेमिंग एंड पर्सपेक्टिव। तो सेंटेंस क्या कह रहे हैं कि पोइट्री से जो हमें कंफर्ट मिलता है एंड पोइट्री बूस्ट्स आवर मूड, ठीक है। तो वो किस वजह से हो सकता है? मे हैव अ लॉट टू डू विद फ्रेमिंग एंड पर्सपेक्टिव। कैसे पोइट्री फ्रेम की गई है, कैसे उसे बनाया गया है, कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया, एंड द पर्सपेक्टिव, हमारा पर्सपेक्टिव क्या है। सो दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। द सेकेंड सेंटेंस सेज as a creative device, poems slow our reaction to an experience and can alter our perception of it in way that help us find new angles. So creative device है poetry, ठीक है। creative writing, poems are they are a creative device. तो poems क्या करती हैं? poems slow our reaction to an experience, they help us slow down and they alter means to change, so they can change our perception. What does perception mean? Perception means how we look at things. तो वो क्या कर सकते हैं? वो they can change the way we look at things and in a way that help us find new angles. अब way that help us find new angles, way is singular and help is a plural verb, okay। So perception of it in way that help us, so ये वैसे ही ये incorrect है because in ways होना चाहिए, it should be in ways that help us because help is a plural verb, so here it should be ways. So sentence 2 is incorrect. The third sentence says it can strengthen our sense of identity and connect us to the experiences of others to foster empathy. What can poetry do? It can strengthen our sense of identity. तो वो हमारे आइडेंटिटी के जो हमारे हाउ डू वी आइडेंटिफाई आवर सेल्व्स, तो उसको वो और स्ट्रॉन्ग कर सकती है एंड कनेक्ट अस टू द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स, और हमें बाकियों के एक्सपीरियंस से कनेक्ट करने में हेल्प करती है। टू फॉस्टर, व्हाट डज फॉस्टर मीन? फॉस्टर मीन्स टू स्ट्रेंथन or to increase empathy. And what does empathy mean? Empathy means how we are able to experience emotions which are being felt by others. जो दूसरे लोग फील कर रहे हैं, हम उन्हीं इमोशंस को खुद भी एक्सपीरियंस कर पाएँ, तो वो एम्पैथी, उसे हम कहते हैं एम्पैथी। वी आर एम्पैथाइजिंग विद अदर पीपल। तो पोइट्री क्या कर सकती है? वो हमें कनेक्ट करने में हेल्प कर सकती है दूसरों के एक्सपीरियंसेस से, और एम्पैथी इंक्रीज करने में हेल्प कर सकती है। सो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट। सो द आंसर शुड बी 1 and 3. A should be the answer. The next set, okay, so we have the next set of sentences. The first sentence says, among daily changes within the world of work, there has never been a better time for employees to cultivate skills to help they better manage workplace challenges. So among daily challenges within the world of work, बहुत सारे challenges हैं in the world of work. There has never been a better time, इससे better time नहीं मिला for employees to cultivate skills to help they better manage workplace. अब यहाँ देखो, cultivate skills to help they better, to help verb के बाद object, help whom? Help they. हेल्प के बाद यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज हो रहा है दे, बट इट शुड बी एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्योंकि हेल्प के बाद आ रहा है, तो ये दे नहीं होना चाहिए। व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए इस चीज़ के? देम। वाई देम? क्योंकि हेल्प के बाद इट इज एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट, तो वहाँ सब्जेक्टिव प्रोनाउन इनकरेक्ट है। तो टू हेल्प देम बेटर मैनेज वर्क प्लेस चैलेंजेस, सो दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। सेकेंड सेज दिस इज वेयर द आइडिया ऑफ द ग्रोथ माइंडसेट कम्स इन। सो एम्प्लॉयज जो है अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं, और यहाँ पे आइडिया आता है ऑफ ग्रोथ माइंडसेट, एंड यहाँ पे उसी आइडिया को एक्सप्लेन किया गया है। द बिलीफ दैट वर्कर्स आर केपेबल ऑफ एक्टिवली इम्प्रूव देयर एबिलिटीज, कि क्या है, व्हाट इज ग्रोथ माइंडसेट? द बिलीफ, क्या बिलीफ? कि वर्कर्स आर केपेबल, दे आर एबल, उनके पास एबिलिटी है ऑफ एक्टिवली इम्प्रूव देयर एबिलिटीज। एक्टिवली इम्प्रूव, सी ऑफ प्लस वर्ब, जब भी हम यूज करते हैं ऑफ
प्लस वर्ब। तो वर्ब हमेशा कौन सी फॉर्म में होती है? इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस फॉर्म वर्ब, आईएनजी फॉर्म में होगी। तो यहाँ पे इम्प्रूव इनकरेक्ट है, इट शुड बी व्हाट? इट शुड बी इम्प्रूविंग, it should be improving. So are capable of improving their abilities. Okay, so this is incorrect. The third sentence says harnessing this mindset means getting comfortable with embracing hurdles. Harnessing means making the use of something. So harnessing this mindset, इस mindset को हम कैसे use कर सकते हैं? It means getting comfortable with embracing hurdles. आदत हो जाना, कंफर्टेबल हो जाना किसमें? एम्ब्रेसिंग हर्डल्स। एम्ब्रेसिंग मीन्स एक्सेप्टिंग हर्डल्स। हर्डल्स आर द प्रॉब्लम्स, तो एक्सेप्टिंग द प्रॉब्लम्स, लर्निंग फ्रॉम क्रिटिसिज्म एंड परसिस्टिंग व्हेन थिंग्स गेट डिफिकल्ट। तो यहाँ पर यहाँ देखो, एम्ब्रेसिंग, लर्निंग and persisting, they should be parallel in form. A list of things has been given, क्या क्या? embracing hurdles, learning from criticism and persisting when things get difficult. तो ये correct है। अगर इसमें यहाँ पे persisting की जगह persist होता या learning की जगह learn या learned होता, so they would have been it would have been incorrect. पर यहाँ पर this sentence is correct. So the answer should be D. The first sentence says, reflections about our purpose in life can begin in adolescence. Reflection, what does reflection mean? Reflection, one reflection, हम सबको पता है एक reflection का meaning होता है light जो है it strikes a surface and reflects. But reflection का different एक और meaning भी होता है. What does reflection mean? To think about something. ठीक है. So reflections means thoughts. Reflections, deep thoughts about our purpose. हमारा क्या purpose है? What is our aim in life? So वो thoughts कब begin हो सकते हैं? They can begin in adolescence when we begin to explore our individual identities, values and interests. So यहाँ भी identities, values and interests ये correct है, सब plural में है. So this sentence is correct. The second sentence says significant times of adversity during formative developmental years. Significant times of adversity. Adversity is a problems, ठीक है. So significant times of adversity during formative developmental years, जब हम grow हो रहे होते हैं, when we are growing, और उस time पे जो adversities, difficulties आती है, they can guide us toward a specific cause or area of service. तो उससे क्या होगा? They can help us towards a specific cause. Cause means कोई भी social cause हो सकता है जिसको हम support करते हैं in our communities. So this sentence is correct. The third sentence says, while our sense of purpose may wax and wane over the course of our lives. कि हमारा जो अभी पूरे तीनों sentences किसकी बात करें? Sense of purpose की. तो sense of purpose जो है, it may wax and wane. Wax and wane means it may fade over time, over the course of our lives. Wax and wane means to fade. It can be cultivated. It can be cultivated and doing so is a worthwhile practice. उसे cultivate किया जा सकता है, उसे इस sense of purpose को दोबारा grow किया जा सकता है, and doing so is a worthwhile practice. तो क्या ये sentence भी correct है? Is it correct or not? This sentence is not correct. क्यों? See, practice and practice, क्या difference है? C and S का difference है. Practice with an S is a verb. Okay, practice with an S is a verb and practice with a C is a noun. ठीक है. तो यहाँ पे and doing so is a worthwhile what? Worthwhile यहाँ adjective है. तो worthwhile adjective किसको modify करेगा? It should modify a noun. तो यहाँ पे SE verb की जगह it should be CE. PRACTICE practice. So this is incorrect. So 1 and 2 are correct. So the answer should be C. The first sentence, according to in the first sentence, it says compelling evidence has been emerged. Compelling evidence has emerged that a malaria outbreak in Ethiopia this year was caused by the arrival of an insecticide-resistant species of mosquito.
सो कंपेलिंग मीन्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग और कन्विंसिंग एविडेंस हमें मिला है, प्रूफ मिला है कि मलेरिया आउटब्रेक इन इथियोपिया जो है वो किसकी वजह से हुई थी. इट वाज कॉज्ड बाय द अराइव ऑफ एन इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट स्पीशीज. अराइव, अराइव इज अ वर्ब. ओके, एंड द के बाद क्या होना चाहिए यहाँ पे? कॉज्ड बाय व्हाट? कॉज्ड बाय, it should be there should be a noun. Caused by what? It should be, तो arrive verb यहाँ पर इसका यूज गलत है. it should be a noun, और noun यहाँ पर क्या होगा? arrival. so it is incorrect. यहाँ arrive की जगह होना चाहिए arrival of an insecticide resistant species of mosquito. The second sentence says the finding complicates disease elimination efforts in Africa. Finding, जो क्या finding है कि जो आउटब्रेक थी वो एक इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट स्पीशीज से हुई है. अब ये फाइंडिंग क्या करती है? इट कॉम्प्लिकेट्स डिजीज एलिमिनेशन एफर्ट्स इन अफ्रीका. इस फाइंडिंग से जो भी एफर्ट्स चल रहे थे इस डिजीज को, मलेरिया को एलिमिनेट करने के, वो कॉम्प्लिकेट हो गए. फर्दर हमें क्या पता चल रहा है? वेयर 95% ऑफ द वर्ल्ड्स मलेरिया इन्फेक्शंस अकर. तो अफ्रीका में 95% वर्ल्ड की इन्फेक्शंस होते हैं. एंड हैज़ रिसर्चर्स वरीड. सो यहाँ देखो, अगर हम सिर्फ इतना इसको रीड करें इस पार्ट को, द फाइंडिंग कॉम्प्लिकेट्स डिजीज एलिमिनेशन एफर्ट्स इन अफ्रीका एंड फाइंडिंग सब्जेक्ट है. सो इसके साथ ये वर्ब है हैज़, सिंगुलर सब्जेक्ट है फाइंडिंग, एंड उसका जो वर्ब है इट शुड ऑल्सो बी सिंगुलर. तो हैज़ यहाँ पे करेक्ट है. एंड हैज़ रिसर्चर्स वरीड. सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट. The third sentence says malaria outbreaks have been difficult to control in Africa recently because healthcare workers and researchers have been focusing in the COVID-19 pandemic. I guess ये शायद पता चल गया होगा सबको. Malaria outbreaks have been difficult to control in Africa. क्यों मुश्किल हुई उन आउटब्रेक्स को कंट्रोल करने में? बिकॉज हेल्थ केयर वर्कर्स एंड रिसर्चर्स हैव बीन फोकसिंग इन इज, यहाँ पर क्या होना चाहिए? फोकसिंग. वी ऑलवेज फोकस ऑन समथिंग, वी डोंट फोकस इन समथिंग. सो इट शुड बी फोकसिंग ऑन द COVID-19 पैंडेमिक. सो 3 इज इनकरेक्ट. इट शुड बी ओनली 2. सो C is the right answer. So thank you for watching, and please do like and subscribe, do like this video, and subscribe to our channel if you have not already done so, and please share if you have liked this video. Thank you.